हेलो माय डियर फ्रेंड्स, लिटिसिटी चैनल पर आई सौरभ अग्रवाल once again welcome you all. And today we are going to deal with a topic which is very important topic. In fact, it is considered one of the most complicated topics in literary theory. Yes, I am talking about deconstruction. As you all know that deconstruction is a theoretical approach. It is not just related with literature. Basically it is a kind of philosophical exercise, but in literature also it has played a very vital role. In fact my फ्रेंड्स, जैसे ही पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म का एरा आया, डीकंस्ट्रक्शन की थियरीज, देखिए जो टर्म डीकंस्ट्रक्शन है वो हो सकता है 50s और 60s को बिलोंग करती हो, लेकिन जो प्रोसेस है डीकंस्ट्रक्शन की, जो इससे जुड़े हुए आइडियाज़ हैं, जो इससे जुड़ी हुई स्ट्रेटजीज़ हैं, वो सिर्फ डरीडा नहीं बल्कि डरीडा से पहले भी बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स और थिंकर्स थे जिनके द्वारा इन फिलोसफीज़ इन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया जाता था. ओके, व्हाट शुड बी माय पर्पस, व्हाट इज़ माय बेसिक स्ट्रेटजी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. In this particular video I am not going to talk about any technical term. वो हम सेकेंड पार्ट में सारी टर्म्स देखेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इन दिस वीडियो आवर होल फोकस इज ऑन द प्रोसेस ऑफ डीकंस्ट्रक्शन. हाउ दिस डीकंस्ट्रक्शन, देखिए जो टाइटल है वो भी मैंने दिया है, डूइंग डीकंस्ट्रक्शन. व्हाट डज अ डीकंस्ट्रक्टिव रीडिंग डू, उसके अंदर हम क्या करते हैं. बेसिकली हाउ डज वी अप्लाई दिस डीकंस्ट्रक्टिव अप्रोच, दिस मेथड टू अ पर्टिकुलर टेक्स्ट. वो सारी चीजें हम कोशिश करेंगे समझने की. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन. फर्स्ट थिंग, बेसिक थिंग, बिल्कुल सिंपल वे में वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज डीकंस्ट्रक्शन. इट इज वे ऑफ क्रिटिसाइजिंग नॉट ओनली बोथ लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल टेक्स्ट बट आल्सो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. जो बेसिक चीज हमें समझनी है, डीकंस्ट्रक्शन इज नॉट लिमिटेड टू लिटरेचर और फिलोसफी. इट इज बेसिकली अ वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स एट एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर्स. जो भी सोसाइटी के, जो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कोई भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सबको देखने का, इवेल्युएशन करने का इट्स अ रेडिकल वे. इट इज अ रेडिकल एंड आइकोनोक्लास्टिक मेथड. व्हाट इज आइकोनोक्लास्टिक? विच बेसिकली डिस्ट्रॉयज द ट्रेडिशनली हेल्ड व्यूज. जो भी हम मान के चलते हैं दैट इट इज बियॉन्ड आवर डाउट एंड क्वेश्चंस, उन सबको ये क्वेश्चन करने का एक तरीका है. रीवैल्यूएशन है, इट इज नॉट इवैल्यूएशन, इट इज रीवैल्यूएशन है. ट्रेडिशनली हेल्ड व्यूज अबाउट मीनिंग मेकिंग प्रोसेस. देखिए जो मीनिंग मेकिंग प्रोसेस है, इसके ऊपर बहुत सारे फिलोसोफर्स ने 20th सेंचुरी में, बल्कि एंड ऑफ द जो 19th सेंचुरी था तभी से ये स्टार्ट हो चुका था कि व्हाई शुड वी फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न, व्हाई शुड वी accept a particular dogma, why should we blindly follow a tradition. और यही जो बेसिकली चीज है, ये जो बहुत सारे फिलोसोफर्स ने करा है, डीकंस्ट्रक्शन उन सबका एक तरह से एक्मी है, उन सबका एक पीक पॉइंट है. It questions the validity of established criteria of interpretation and finality of interpretation. आप सबने जिन्होंने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा है, रोलान बार्थे को पढ़ा है, डेथ ऑफ द ऑथर के बारे में पढ़ा है, you know very well that these philosophers, these thinkers basically point out one single thing, that there cannot be one final meaning. जैसा कि न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर बताया गया था दैट एवरी टेक्स्ट हैज वन फाइनल मीनिंग, वन लास्ट इंटरप्रिटेशन, ये उससे बिल्कुल रिवर्स है. ये बेसिकली ये कहता है कि देयर कैन नॉट बी फाइनल मीनिंग, देयर कैन नॉट बी वन अल्टीमेट इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी टेक्स्ट. ए टेक्स्ट इज ओपन टू इनफैक्ट limitless interpretation. So in simple words, it is a strategy to reveal the insufficiency of all traditional and established approaches. All these approaches, all these holistic approaches, चाहे वो प्लेटोनिस्ट हो, चाहे वो एरिस्टोटल का हो, चाहे उसके बाद के दूसरे जो फिलोसोफर्स हो, चाहे वेस्टर्न ट्रेडिशन हो, चाहे ईस्टर्न ट्रेडिशन हो, ये सारी अप्रोचेस क्या है, इनसफिशिएंट हैं, क्योंकि दे ट्राई टू प्रोड्यूस अ क्लोज्ड एंड फिक्स्ड मीनिंग फॉर एनी टेक्स्ट. हियर टेक्स्ट डज
नॉट मीन ओनली लिटरेचर। हेयर टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकता है, डेमोक्रेसी हो सकता है, कैपिटलिज्म हो सकता है, फैशन इंडस्ट्री हो सकता है, एनीथिंग, अ मूवी हो सकती है, उसके बारे में जो हमारा इंटरप्रिटेशन है, और वो इंटरप्रिटेशन को जब हम प्रेजेंट करते हैं इस वे में दैट दिस इज द मीनिंग, दिस इज द फाइनल मीनिंग, दिस इज द अल्टीमेट मीनिंग और इंटेंशन ऑफ द ऑथर और द टेक्स्ट, ये जो बेसिक डीकंस्ट्रक्टिव रीडिंग होती है इन सब के खिलाफ, इट बेसिकली गोज अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर अप्रोच एंड इट ट्राइज टू एस्टेब्लिश दैट देयर कैन नॉट बी वन फाइनल मीनिंग। ओके, क्योंकि दरिडा खुद एक फिलोसोफर थे, लिटरेचर उनका बेसिकली साइड इंटरेस्ट था। लिटरेचर को उन्होंने, क्योंकि लिटरेचर इज अ स्पेशल यूज ऑफ लैंग्वेज एंड दरिडा वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू द वर्किंग, इनटू द हाउ अ लैंग्वेज बेसिकली accommodates itself according to the political system। इस वजह से उन्होंने लिटरेचर में भी अपनी थियरीज को अप्लाई करा। तो बेसिकली डीकंस्ट्रक्शन को अगर हम फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये क्या है, इट इज बेसिकली क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोनिज्म। प्लेटो, देखिए जब प्लेटो ने अपने आइडियोलॉजी प्रेजेंट करी, वैसे तो व्हाट हैपन्स व्हेनेवर अ ग्रेट फिलोसोफर प्रेजेंट्स हिज और हर व्यूज, तो उसके बाद जो उसके बाद वाले फिलोसोफर्स होते हैं, दे ट्राई टू रिजेक्ट और दे ट्राई टू गिव समथिंग न्यू। लेकिन हमेशा प्रॉब्लम क्या होती है कि प्लेटो ने एक सिस्टम दिया था, द बिलीफ एग्जिस्टेंस इज स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ अपोजिशन। वो सिस्टम अभी तक हम लोगों ने, खासकर यूरोप के अंदर जितनी फिलोसॉफिकल आगे की भी नई नई थियरीज आई, उन सभी के अंदर ये मान के चला गया दैट दिस universe, our existence, our thoughts, these all can be defined in a proper binary oppositional manner, which means that there are always we can say seesaw, एक तरफ पलड़ा एक साइड है और दूसरी तरफ दोनों को बराबर करके या ऊपर नीचे करके we can comprehend this world। तो ये जो बेसिकली बाइनरी टर्म्स थी, जैसे कि प्रेजेंस एंड एब्सेंस, इजीली हम इसको बता सकते हैं बॉडी एंड सोल, गुड एंड इविल, लाइट एंड डार्क, मैन, women। You will find that in all the areas of human concepts and human thinking, human cognition, we always define things according to this particular oppositional view। Now the problem is the oppositions are hierarchical। What does we mean by this? What does we mean by this particular term hierarchical? In this pair, in this oppositional pair, one term is more valuable than the other one। एक सिस्टम के तहत हम ये मानकर चलते हैं that this pair is not on equivalent term। मैंने इसीलिए आपको एग्जांपल दिया है seesaw का। seesaw के अंदर it can never happen, जो झूला होता है वो हमेशा कभी भी बैलेंस स्टेट में नहीं रह सकता। always it basically one side is has more weight than the other side। Plato and other philosophers reached a conclusion about the system of this world, and as per their conclusions made these hierarchical pairs। बहुत कॉमन कुछ पेयर्स के बारे में देखें अपन, बॉडी एंड सोल। आप किसी भी फिलोसॉफिकल सिस्टम में देखें, यू विल फाइंड सोल इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन बॉडी। लाइट एंड डार्क, लाइट इज रिलेटेड विद गुड एंड गॉड्स, while darkness is related with evil and Satan। Once again good and evil, once again any field you can take, you will find that out of that particular pair, one terms asserts value while the other terms asserts negative value। One is desirable and the other one is we should ignore। The tendency then onward is to find such binary in every field of existence, and all philosophers and thinkers contributed to such pairs। जैसे जैसे philosophical, जैसे जैसे human cognition बढ़ता चला गया, this field of making pairs also get extended, और इसके अंदर new terms अपने आप में आने लगी और हर term अपने साथ एक prerogative लेकर आती। prerogative लेकर आती इसका मीन्स एक term को weightage दिया
जाता, सेंटर दिया जाता। और बेसिकली रिलीजन के अंदर जैसे हम देखें, जब ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन स्टार्ट हुआ, ऑलवेज देयर वाज अ गॉड हु वाज पोटेंट, और इवन वी शुड से ऑमनीपोटेंट, और उस गॉड का एक एडवर्सरी हुआ करता था। इन क्रिश्चियनिटी इट इज सैटन, एंड इन ऑल अदर रिलीजन्स आल्सो, इन देयर एपिक्स, इन देयर मैनिफेस्टेशंस आल्सो वी विल फाइंड अ गॉड फिगर एंड अ राइवल फिगर। और उसके अलावा लाइट एंड डार्कनेस, ये भी रिलीजन से जुड़ा हुआ है। मॉरलिटी के अंदर हम जाए, चाहे हम अर्ली मॉरलिटी ड्रामा देखें या फिर मॉरलिटी बुक्स देखें, देयर वर ऑलवेज फिक्स्ड पेयर्स, जैसे गुड, इविल, ट्रुथ, lie, honesty, dishonesty. You can talk about any pair, and how in our schools, in our morality education we are taught these binaries, और जब हमें ये binaries बताए जाते हैं, we are always given examples with the help of stories and other things, fables, that how one particular value is desirable. Similarly sociological existence के अंदर करें, then we have this term nature versus culture, and always this culture, though culture may have some positive values added to it, lekin desirable condition still is considered to be the natural one. Then man and women, one of the most talked about, controversial, debatable, and around which so many theories evolve, that is of man and women. Even in the very basic literature, all kind of fictions we have, if it is novel or drama, we have a traditional pair, hero and villain. On one side we have hero, yes, with the development of literature the line between these two is sometimes blurred. Kai baar it is difficult to say that he is or she is the protagonist, hero, but agar hum on the whole dekhein, it is a clear mark ki there is a hero whose qualities are desirable, and on the opposite side we have a villain. Okay, in each of these pairs the first term is taken as more valuable and desirable, and it attributes a kind of presence, while the second term refers to lack or absence. Okay, तो अगर हम एक छोटे से diagrammatic scale के द्वारा समझने की कोशिश करें, these terms are not on equal scale. We cannot put them light is equal to darkness. No, it is not like that. It is like that light and darkness, in which light has upper hand, light is more valuable, light gives the idea of presence, light is desirable, while there is darkness, and always there is a desired movement from darkness towards light. This darkness depends upon light, this darkness is in the margin side. Okay, now Derrida, what he does, he questions this monolithic tendency. Monolithic tendency means always favoring one particular term, and basically a desire to put that term into the center, and he calls it, it is an important term. इस पूरे वीडियो के अंदर केवल एक यही टर्म, टेक्निकल टर्म मैंने यूज करी है, that is metaphysics of presence. According to Derrida, whole Western theories and philosophical concept revolve around this metaphysics of presence. They demand presence everywhere. Basically, he was talking about the binary opposite of speech versus writing. We will discuss it in another lesson. But his basic concept was that always there is a desire for the presence, and that presence is always at the center. One terms take the center and dominance, and the other terms become marginal, and we almost avoid this term. This जो margin पे term होती है, it basically struggles for its existential identity. Now, Derrida's whole endeavor in his deconstructive practice is to debunk, is to reject, is to show the weakness of this metaphysics of presence by showing that it is impossible to have a fixed center-margin relationship.
he is basically trying to say that when we put a term into the center and one term, the other term on the margin, it is basically a wrong way to understand things, because this relationship between center and margin is a very temporary kind of thing. It is not a permanent mode of existence. Now Derrida stresses that it is because of language. That is why he was basically primarily a philosopher, but his interest in literature was because of this language. And according to him, it is this language which creates this problem. Human minds are always conditioned through concepts, codes and categories, and all these things come with the help of language and functioning only on basis of conceptual pairs that are constructed. That is construction. So that is why he uses a new coinage, deconstruction. Now deconstruction is not just reversing the traditionally held hierarchies. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो डीकंस्ट्रक्शन समझने के लिए वो ये है, इट इज नॉट रिवर्सल. इट इज नॉट शोइंग दैट व्हाट इज ऑन मार्जिन शुड बी इन सेंटर, व्हाट इज ऑन सेंटर शुड बी एट मार्जिन. नो, इट इज नॉट डिस्ट्रक्शन कॉलिंग फॉर न्यू सेंटर्स एज सम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ट्राई टू डू. देखिए क्या होता है व्हेन देयर इज अ रिबेलियन, द सेंटर इज बेसिकली डन अवे विद. उस सेंटर को हम हटा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज अ कम्युनिस्ट रिबेलियन इन रशिया एंड जार जो थे उनको हटाकर वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी सेंटर में आ गई. इट सो हैपन्स इन सम अदर कंट्रीज आल्सो. is it a sort of deconstruction? Because हम जो कह रहे थे जो सेंटर में था और जो मार्जिन पे था, फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें या रशियन रेवोल्यूशन की बात करें, तो वहाँ से जो मार्जिन वाला था वो उठ के सेंटर में आ गया. नो, इट्स हाफ ऑफ द टास्क. इट इज़ नॉट डिस्ट्रक्शन, बिकॉज व्हाट हैज़ हैपन्ड, वो सेंटर में आ गया, नाउ ही इज एट द सेंटर और शी इज एट द सेंटर, और जो दूसरी टर्म है वो मार्जिन पे चली गई. वंस अगेन वी आर ट्रैप्ड इनटू दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप जिसमें एक सेंटर है और एक मार्जिन है. बेसिकली डीकंस्ट्रक्शन इज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल प्रैक्टिस. Reason, it always stands against the imposition of laws, ideas which are considered grand narrative. आप में से जिसने भी पोस्ट मॉडर्न थियरीज के बारे में पढ़ा है, you should be aware of this term grand narratives. What is a grand narrative? The ideas and theories which are universally accepted, जिनको हम मान के चलते हैं, okay, this is right. ये जो right का concept है, that it must be and it should be correct way of thinking, of believing, ये grand narrative का concept होता है. और deconstructive reading is basically deconstructing these grand narratives. In other words, deconstruction is an attempt to understand inevitable undecidability of meaning. I have tried to make deconstruction in this one single term, undecidability of meaning, where we can look at the term, we can say, okay, this may be the meaning of this particular term. Maybe is most important in deconstruction. It can never be, must be. This is the whole difference between a deconstructive reading and other sorts of reading, because it basically involves a play between margin and center in which none can be declared as final winner. We can never say it has become winner, or I have put the margin into the center, so now the old margin is the new center. No, there is always an unstoppable play between margin and center. Now a deconstructive reading of any text, basically that is why it consists of two phases or two steps, two stages. First step, very simple to understand. It is to recognize the fact the hierarchy of any binary position is not fixed. Center is not always center, margin is not always center. It is achieved by reversing the hierarchy of the binaries, by putting the marginalized at the center, by showing that actually the center terms depend on either to marginalized term. क्या करते हैं इसके अंदर, जिस चीज को भी सेंटर में प्रेजेंस के लिए माना जाता है उसको हम एक बार सेंटर से हटाकर जो मार्जिन में है उसको सेंटर में रखकर शो करते हैं दैट यस
it is possible. The second option is also equally valid as the first one. एक एग्जांपल से हम समझते हैं, बहुत ही बेसिक एग्जांपल, मैन वर्सेस वुमेन, जिसके अंदर ऑब्वियसली मैन इज एट द सेंटर एज द प्रेजेंस ऑफ फेलस, एंड दैट इज व्हाई Derrida calls it phallocentric, because man has phallus, penis, that is why he is at the center, and women is defined as a sort of some sort of lack or absence. In other words, look at the definitions of women given by different philosophers. Absence of phallus या फिर signifier man create signifier woman, या woman is half man, woman is incomplete without man, या फिर फ्राइड का फेमस जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है पीनस एंड वे. These all things show that man is at the center of the biological existence and woman is at the margin because women lacks something which man has. That is why she has to be on the margin and man has to be in the center, at the center. Now this particular sort of thinking, this particular sort of idea, it has basically set the social, the familiar relationship of our societies. चाहे वो हम पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात करें, फादर फिगर की बात करें, या फिर रोल ऑफ मैन एंड वुमेन इन डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी की बात करें, एवरीवेयर दिस पर्टिकुलर थिंकिंग इज द बेसिस ऑफ दिस. अब डीकंस्ट्रक्शन के अंदर क्या करता है, दिस जो हायरार्की, ये बाइनरी देख ली, फर्स्ट पुट द टर्म वुमेन एट द सेंटर. द लॉजिक इज वेरी सिंपल, वुमेन इज सपोज टू बी इनकम्प्लीट मैन, ओके, लेकिन मैन इज बॉर्न ऑफ अ वूम विच ही लैक्स. Where does man come from? It comes from a womb of woman, and man doesn't have a womb. Basically, what does this mean? It means presence of man originates from a woman, and it means a man is a non-woman. A man is half because man doesn't have that organ which gives birth. That is why man is a non-woman. Man is defined in terms of women, not women is defined in terms of man. A man is a person who lacks womb. In other words, without women, man cannot exist. Now, what happens? ये शो करता है कि एक्चुअल में जो मार्जिन की टर्म है वो टर्म सेंटर में भी आ गई है, एंड इट शोज दैट इट हैज इट्स प्रेजेंस इवन बिफोर द टर्म विच वाज हाइदर टू सेंटर. और ये बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इट इज नोन एज द रिवर्सल ऑफ हायरार्की. नाउ वुमेन इज एट द सेंटर. You can see women is at the center and man is at the margin. Women takes the center and first step is complete. How the original hierarchy was flawed, it is not fixed and can be easily reversed with logic. Many political readings stopped at this phase and tried to establish a new hierarchy, but it is not what deconstruction wants to show. Deconstruction does not halt with this move. It does not just reverse the hierarchies. It shows the impossibility of a fixed center. Any of the term can be taken as the central one. So it is the fluidity of meaning that we are talking about. Center, margin, margin, center. It is always a dancing going on between these two entities. We cannot reach the final meaning. There is always a chance of reversal of signifier and signified. Each signified has the ability to become a signifier itself. खुद जो मार्जिन पे टर्म है वो सेंटर में आकर अपना एक खुद एक सिग्निफायर बन सकती है. This leads to a non-stop postponing of the final meaning. The chain goes on and on. We can never reach an ultimate frame where we can achieve a stable signifier is equal to signified status. फर्डिनांड de Saussure के आपने जो थियरी साइन की पढ़ी होगी स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर, in which he says that sign is equal to signifier upon signified, उस थियरी का बेसिकली डीबंकिंग है, उस थियरी को रिजेक्ट करना है. He says that there cannot be a stable relationship between a signifier and signified because each signified has capacity to become a signifier for a new term, and this goes on.
No fixed center. Each signifier leads to another signifier in an endless series. So it is center, man and women. This is basically deconstruction. Man can come to center, women can come to center, and both are continuously jostling with each other to occupy the center. The reader, the interpreter who is sitting outside, he can just look at this play. He cannot or she cannot decide for one final thing that which is liable to take the center forever. This is what deconstruction all about. Okay फ्रेंड्स, देखो मैंने डीकंस्ट्रक्शन के बारे में तो बेसिक बताया. डरिडा इज क्वाइट इनफेमस फॉर यूजिंग सर्टेन टर्म्स which he coined or which he borrowed from different sources, and from examination point of view these terms are very important. We are going to discuss all these terms. मैंने वो टर्म्स इसलिए नहीं ली सो दैट यू कैन बेसिकली अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ दिस डीकंस्ट्रक्शन. आने वाले चैप्टर के अंदर वी आर इन द सेकेंड पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज इंपॉर्टेंट टर्म्स with which deconstruction is presented by Derrida and other writer. Thank you friends.